वेलकम बैक टू देवरुन व्लॉग्स। और आज हम हैं माउफनलूर में। ये हमारा तीसरा दिन है। इस होम स्टे में हम लोग रहे थे। और माउफनलूर का व्यू देखिए। बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये देखिए व्यू। उधर जो वैली है थोड़ा जूको टाइप लगता है, पिंचा बोल रही थी। वेलकम गाइस। अभी हम हैं माउफनलूर में और ये है लेक साइड। यहाँ का व्यू देखिए। इधर पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। पैडल बोट से मैंने सोचा मैं भी थोड़ा झूला झूल लूं। अभी हम लोग हैं यहाँ लॉन्गस्टन पहुँचने के रास्ते पे। और यहाँ से ये व्यू देखिए आप लोग। इतना बढ़िया है, सुंदर व्यू है। नीचे में खेती होती है और ये सब माउंटेन्स। कैसा लगा आप लोगों को व्यू यहाँ का? इतना बढ़िया है। Now we are in Longstoin market and we are searching for dokhlai. If we find it, it's nice. Okay. It's a pork salad and we are searching for it. This is Longstoin. We're still searching for dokhlai. This one, bro? Direct shop. Oh. Hello. Fruits. How much will you like? 200? 200. So we got dokhlai over here. Tell her to make separate 100. Mai xong ăn sẽ cắt hả? Cũng được cái bông không tự nhiên. So finally we found dokhlai. Let's take it. So finally our dokhlai is prepared. And
Now we'll move back to the car. This is a typical Khasi hotel. This is the way to Nongkhrom Island. We're going to Nongkhrom right now. And this is James. Hello. He's one of my best buddies over here. अभी हम लोग नोंगख्रोम रिवर लाइन के सामने हैं. अभी जा रहे हैं नोंगख्रोम. Bro, give me that cigarette. There are so many birds and all. Hey, do one thing now. Later come. You'll act as if you're taking all this. Swachh Bharat. This is a river, and this is the bridge. I've been here before. This is the Nongkhrom River Island. These people are fishing with big rods. Fly fishing. This is big Fly fishing. fly fishing. Come on, let's go. Hello. Hello everyone. This is very beautiful. This is a small river island. Yeah. This one. And then we are going to the next river island. They are afraid. Why are you guys so afraid? They won't go what? आ जाओ. This is another part of the river, and now we are going to the main island. See, those guys are fishing on the boat. Horse. Wild horse. No people they have water. Oh, they are one of. Let them like this. Okay. Only during potatoes harvest. This is Nongkhrom, and we're finally in Nongkhrom, setting foot right now. Okay. We have to pay here tickets for entering this place. How much? 24. Per person? Okay. It is 20 rupees per person for entering the island.
500 no 500 Mình đưa em mấy I've been here before. Go there now. Ini original ya bro. ये है रिवर का बीच। आप लोगों ने समुंदर पे बीच सुना होगा, लेकिन रिवर पे भी बीच होता है, जो कि यहाँ आपको दिख रहा है। ये है रिवर और ये सब है आइलैंड रिवर के बीच में। नोंगख्रोम रिवर आइलैंड। कैसा लगा आप लोगों को व्यू? आशा करता हूँ अच्छा ही लगा होगा। अभी हम लोग जा रहे हैं एक वाटरफॉल की तरफ। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं वाटरफॉल। Yeah, they're coming. This is shortcut man. Otherwise there's one road no from there. It's far. Oh. You have to go up from there. I think we have reached the waterfall. This is the beautiful waterfall of Nongkhrom. This is called Shait Tum Tum. It's called Shait Tum Tum. Shait Ulkum. This waterfall is called Shait Ulkum. इतना पीसफुल है यहाँ पे। मैं पहले नोंगख्रोम आया था, लेकिन इस वाटरफॉल पे नहीं आया था। ये मेरा फर्स्ट टाइम है इस वाटरफॉल में।
सब आ गए काफ़ी हार्ड ट्रैक के बाद। This is so beautiful. जन्नत है भाई, जन्नत। So nice. One, three. So, कैसा लगा आप लोगों को? आशा करता हूँ अच्छा ही लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो। Place is at Thompson River Island. Hey! Natural swing. Yeah. Okay. We're going back from Nong Knom, walking through the bridge, suspended bridge. Check out the road, bros. This was the road to Nong Knom. अभी हम लोग लंच करेंगे और लंच के लिए हम लोग खोज रहे हैं कहाँ पे अच्छा खाना मिलेगा। रविला लोग वेज खाएंगे
मैं तो पॉक्स से चला लूँगा। ये सब होटल है, खासी होटल। They have They can fry omelette here. omelette. Okay. For us, we'll have chicken. We'll have chicken or pork, anything. Now we are in Wenia Falls. We're going to see the waterfall. Kids are cleaning the steps. No, khai đâu? Khai này. Khai. Nè. This is the breathtaking Wenia Falls. It is the highest waterfall of West Khasi Hills. It is cloudy, but the view is so nice. I hope you like the view. After some time, we'll be returning back to Shillong. James. That's the view. What is the name of the place? It's Dom Marwen. Dom Marwen. Meanings Marwen Clans Hills. The meaning is of like Marwen Clan's hill. Dom Marwen. Dom Marwen. It's nice, no? It is nice. Let the sun come. Let's go up the hill. चलते हैं थोड़ा सा ऊपर. Welcome to Dom Marwen. अभी हम लोग जिस गाड़ी में आए थे उस गाड़ी को छोड़ देंगे और एक यहाँ से टूरिस्ट कैब जाएगा, उसमें चले जाएंगे. और ये जगह देखिए.
अभी वापस शिलोंग चले जाएंगे हम लोग।